Assalamu alaikum, brothers and sisters. Back at it again. Got a whole bunch of Qadianiyam. These hella mad at me. They want me dead again. They're praying for me to die again. They're calling us Satan again. They're acting up. They're acting up. So I'm gonna jump right to it. Today's edition is about Mirza Ghulam Ahmad endorsing the idea that so a lot of Muslims. Here's the story. 1895, the Cantonment Act. This was a law that was passed by the British government, and the Muslims, a lot of Muslims of India, a lot of people of India were upset that the British were using Indian women as prostitutes. So people in India were like, go get European prostitutes, leave these girls alone. Mirza Ghulam Ahmad, so the context is Nikah-Muta and Niyog. Mirza Ghulam Ahmad even said that Nikah-Muta happened. He said it wasn't in the Quran, it wasn't in the Hadith, it did happen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam allowed it, and only if the British would do it, he said, gosh, I wish that Nikah-Muta was allowed and the Christians would do it. But he's like, because of their religion. So then he said, here's what's munasib, what works, what is a good idea. And then he presented this reference from Akhbar-e-Am. So that's the story, that's the context of this quote. And in this book, Mirza Ghulam Ahmad talks about the age of Aisha at the time of marriage, and he even argues that she was 9, so what? If she was 6, so what? Girls mature earlier in hotter climates. So, and then Mirza Bashir Ahmad used this exact same argument, and then later on they changed it. So here's the proof that the Ahmadis don't even believe all of these things. So then in 1940, Dr. Basharat Ahmad admitted that Mirza Ghulam Ahmad was supporting the Muslims and the Hindu and a lot of people in India. He supported what they supported. Right? He said it's munasib to give this quotation from the Akhbar-e-Am. And who was the Akhbar-e-Am? They liked Mirza Ghulam Ahmad, right? They were friendly with Mirza Ghulam Ahmad. So that's an important newspaper to understand the history of Mirza Ghulam Ahmad. So I'm going to play the audio from Arya Dharam. Let me play the audio. Actually, I was supposed to add it to the brand here. Let me just do that now. And I'll just talk to you in the meantime. These guys are so mad. Oh, okay. So here it is. And now I'm gonna play the audio of the book, giving the context, because Huram and these other guys are like, no, it's out of context. He was just giving a quote. No, he was doing more than giving a quote. All right. So is it right here? Yeah, it's right here. Here we go. So ये नाकिस तालीम के बद नताइज हैं। इस्लाम में ये दस्तूर था कि अगर कोई ऐसे सफर में जाता जिसमें कई साल की तवक्कुफ होती तो वो औरत को साथ ले जाता, या अगर औरत साथ जाना ना चाहती तो वो एक दूसरा निकाह उस मुल्क में कर लेता। लेकिन ईसाई मजहब में चूंकि अशद जरूरतों के वक्त में भी दूसरा निकाह नाजायज है, इसलिए बड़े बड़े मुदब्बिर ईसाई कौम के जब इन मुश्किलात में आ पड़ते हैं तो निकाह की तरफ उनको हरगिज तवज्जो नहीं होती और बड़े शौक से हरामकारी में मुब्तला हो जाते हैं। जिन लोगों ने एक्स शौनी हाय नंबर 13 1889 पढ़ा होगा वो इस बात की शहादत दे सकते हैं कि ईसाई मजहब की पाबंदी की वजह से हमारी मुदब्बिर गवर्नमेंट को भी यही मुश्किलात पेश आ गईं। नाजरीन जानते हैं कि ये गवर्नमेंट किस कदर दाना और दूर अंदेश और अपने तमाम कामों में बाइख्तियात है और कैसी कैसी उम्दा तदाबीर रिफाहे आम के लिए इसके हाथ से निकलती हैं और कैसे कैसे हुक्मा और फिलोसफर यूरोप में इसके जेरे साया रहते हैं। मगर ताहम ये दाना गवर्नमेंट मजहबी रोकों की वजह से इस काम में अहसन तदाबीर पैदा करने से नाकाम रही है। यूं तो इस गवर्नमेंट ने अपनी तदबीर और हिकमत और ईजादात से यूनानियों के उलूम को भी खाक में मिला दिया, मगर जिस इंतजाम में मजहब की रोक वाक़ हुई इसके दुरुस्त करने और नाकाबिले एतराज बनाने में गवर्नमेंट कादिर ना हो सकी। इस बात के समझने के लिए वही नमूना एक्ट नंबर 13 1889 काफी है
कि जब गोरों को इस मुल्क में निकाह की जरूरत हुई तो मजहबी रोकों की वजह से निकाह का इंतजाम ना हो सका और ना गवर्नमेंट इस फितरी कानून को तब्दील कर सकी जो जज्बात शहवत के मुतालिक है। आखिर ये कबूल किया गया कि गोरों का बाजारी औरतों से नाजायज ताल्लुक हो। काश अगर इसकी जगह पर मुता भी होता तो लाखों बंदगाने खुदा जना से तो बच जाते। एक मरतबा गवर्नमेंट ने घबरा कर इस कानून को मनसूख भी कर दिया, मगर चूंकि फितरती कानून तकाजा करता था कि जायज तौर पर या नाजायज तौर पर इन जज्बात का तदारुक किया जाए कि जिनसे जिस्मानी बीमारियां जोर पाती हैं, लिहाजा उसी पहले कानून के जारी करने के लिए अब फिर सिलसिला जुम्बानी हो रही है और हम मुनासिब देखते हैं कि इस जगह अखबार आम 9 नवंबर 1895 का वो मजमून जो इस बहस के मुतालिक है वे जिनसे ही लिख दें, और वो ये है, कानून दिखाई। Okay, so he said it was munasib. He endorsed it. He was endorsing the opinion of the Akhbar-e-Am, not just the Akhbar-e-Am. Mirza Ghulam, we never said Mirza Ghulam Ahmad was proposing it. It was already a done deal. The law passed. Indians were responding to it, and they were like, no, leave our women alone. Stop raping our women. Bring your own women. And then they still didn't do it. I think by like the 1920s, they might have been trying it. Come on, man. British soldiers were having their way with the women of India. Mirza Ghulam Ahmad, this is what it was. He agreed with the Akbar-e-Am and other Indians, saying, yeah, you guys, instead of raping our women, rape your own women. You know, and we said, look, your prophet is endorsing rape, right? So this is the story. This is the context, right? And I was gonna play. Let me play like the first few minutes of that. Hold on. वजारत के तब्दील होते ही विलायत के नामवर और सरबर आवर्दा अखबार टाइम्स ने जिस जोर शोर से कानून दिखाई को फिर जारी करने के सिलसिला जुम्बानी की है वो नाजरीन पर जाहिर की जा चुकी है। कंजर्वेटिव वजारत से जो सरकारी ओहदेदार। Okay, so you guys get the point. Then, so the context, remember, is Nikah-Muta and Niyog, and Mirza Ghulam Ahmad is presenting, and the marriage of Aisha, etc., etc., right? So Mirza Ghulam Ahmad says Nikah-Muta did happen, and it was allowed for 3 days, and that was it. That's a lie. And then he says it's not in the Hadith, it's not in the Quran. It is, right? So let me just share the screen to show the reference here, because Ahmadis don't believe. Okay, so here's the prostitution, the Cantonment Act, 1895. This is Wikipedia, but you can follow this reference here, and it's there. All right. The other one, oh look, Tafsir Ibn Kathir. Look, he even says it happened, but it was abrogated. But Ahmadis don't believe in abrogation, do they? Right. So here it is, Tafsir Ibn Kathir, and then the Hadith. Look, Bukhari. And these guys, Ahmadi Jut and this other guy was like, oh, now we're giving you Bukhari. You see what I mean? Ahmadis deny 100 hadith from Bukhari, from Sahih hadith. Okay, here's another example of them. All right, and it's in Muslim, Bukhari and Muslim. So it's an established fact that this stuff happened. It was abrogated. All right, and these guys just can't. They just can't admit to it. So it's okay. Hurm's a competitive guy. You see how mad he was today. You know, I don't get mad. You know what I mean? Why would I get? I don't, because I'm not going to do anything. So why would I get mad? You know, but that's how a fighter thinks. You know, weasels think differently. When you're a weasel, you get mad and you get infuriated. You know what I mean? Infuriated. You're like, I'm so mad. This is what these guys do. Hurm can't understand what. So some African came on, bro. You guys said I don't know Urdu. This and these don't know Urdu. So it's a ridiculous argument. You know, Hurm also tried to say I don't know Arabic. Da 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 da. He tried to criticize my Arabic. Look what it did. It caused your Khalifa to get his Surah Fatiha analyzed by Smile to Jannah, Muzzy Buzz. I was part of that. So everything you guys have tried on me, it hasn't worked. It's backfired. Okay, so now I'm going to show a video from Mirza Tahir Ahmad, where he was endorsing the idea of sex slaves.
All right, so let me pull that up, and I did the subtitles on this. This is actually my video from my YouTube channel. So check it out. पस मंजर ये है कि कुरान करीम में बहुत सी आयत ऐसी हैं जिनसे ये इस्तिंबात होता है कि शादी के ताल्लुकात भी जायज़ हैं और उसके अलावा जो लौंडियां आपके ताबे हों उनके साथ भी ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं और वहाँ शादी की शर्त नहीं है। बाज़ तर्जुमा करने वालों ने इस बात को अजीब समझते हुए और कुरान की जो पाकीज़गी की तालीम है मैंने ही उसके मुताबिक ना समझते हुए ये तर्जुमे किए हैं कि वहाँ भी अगर शादी करो तो फिर ऐसा होगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं पूरी तरह आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि यहाँ शादी की किसी शर्त का कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि ख़ती तौर पर ऐसी आयत हैं जिनमें शादी का जिक्र मुकम्मल करने के बाद फिर इस तमत्तो की इजाज़त दी गई है। ये सवाल है जो ज़हनों को कुरेदता है। इसमें दो पहलू हैं। तो इनने जहाँ लौंडियों से निकाह की इजाज़त दी बल्कि प्रमोट किया, वहाँ मोहसनात की शर्त साथ लगा दी। मोहसनात का एक मतलब है शादीशुदा औरतें, दूसरा मतलब है जो पाक दामन हो। तो फरमाया कि हम तुम्हें जो पहले इजाज़त है वहाँ मोहसनात की कोई शर्त नहीं। ये कुरान करीम की फसाद और बलागत का कमाल है कि जहाँ भी लौंडियों से अज़दवाजी ताल्लुकात बगैर निकाह के करने की इजाज़त है वहाँ उनके मोहसनात की कोई शर्त नहीं, वरना तो शायद ही उन लोगों में से कोई मिलती जो मुशरिकीन में से आ रही थी। इसलिए वहाँ मोहसनात नहीं रखा, लेकिन जहाँ फरमाया कि तुम लौंडियों से भी शादी करो, बल्कि आज़ाद मुशरिकों के मुकाबले पर तुम्हारी लौंडियां बेहतर हैं जो मुसलमान हो गई हों, लेकिन शर्त यह है कि वो मोहसनात हों। Okay, so ladies and gentlemen, quick video. I explained it all real quick. TikTok coming up next, and peace out.